Good morning, afternoon, and good evening. Thank you so much for joining us in this session of the series Deadline or Death Sentence: State Violence and Indigenous Adivasi People's Resistance in India. My name is Lotika Singha, and I'm speaking on behalf of International Solidarity for Academic Freedom in India, which Insaf India and London Mining Network. Today, we are very honored to have with us Dayamani Barla, social activist, journalist, and convener, Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch, Jharkhand, India, and CRB Joy, who engages in issues of resource conflict and governance in India. The session will be moderated by my colleague Pooja, and I will now hand over to her to begin. Thank you, Lotika. I will start with the Bastar report. Please note that whatever is read out in this update is based on news reporting in the mainstream media outlet in India. We do not have any means to verify these claims made in the media, given the propaganda of the Indian state and bias in the mainstream media related to Bastar and other regions, Adivasi regions. Please do not take this information for on face value. However, I am reading this out to you so that we have some sense of what has recently happened in Bastar and other regions of Chhattisgarh. In the last week, various media outlets have published news of several encounters across Bastar and other regions in Chhattisgarh. The Hindu and Times of India on 10th September reported that one alleged Maoist cadre carrying a reward of 800,000 rupees was killed by District Reserve Guard (DRG) and Border Security Force (BSF) in Kanked district of Bastar division. The New Indian Express on 12 September reported the killing of 10 Maoist cadres, including a Central Committee member, Manoj, alias Modam Balakrishna. They were killed in an encounter in Garhwal district of Chhattisgarh. They were killed by the Special Task Force or STF and the Cobra Battalion of the CRPF, Central Reserve Police Force. Garhwal district is in north of Chhattisgarh. The New Indian Express and the Hindu reported that on 12th September, in a separate incident, allegedly three Maoists were killed in an encounter by Cobra, STF, and DRG. Their bodies are not identified yet. The New Indian Express on 17th September reported that two people, alleged to be Maoist cadres, were killed in an encounter by DRG, STF, and Cobra Battalion of CRPF in Bijapur district of Chhattisgarh. The Hindustan Times and Deccan Herald on 18th September reported that a woman alleged to be an area committee member of Maoist party was killed in Sukma district by the DRG. Again, we cannot verify this information. We cannot verify that those who were killed were civilians or Maoist cadres and under what circumstances they were killed. Was there any chance of arresting the Maoist cadre if found and engaged? Regardless, these reports show that militarization and indiscriminate killings in Bastar and other parts of Chhattisgarh continue to reach the goal of accumulation by dispossession in the name of making India Maoist free. In this context, it is also important to take note of decisions of the central and state governments to create land banks and make changes in law to silently facilitate ease of doing business. According to the Industrial Land Bank portal in India, more than 650,000 hectares of land has been put in the land bank only for industrial purposes all over India. According to the report on Moga Bay and Maktub Media, Jharkhand has put around 850,000 hectares of land, largely commons land, in land bank. Jharkhand is an eastern state in India. This land can be used by the corporates either for industrial or compensatory afforestation purposes.
According to a Business Jharkhand report on 18 September 2025, Jharkhand Industrial Area Development Authority has allotted 3,945 hectares of land to 952 companies across the state. Apart from that, since 2019, the government has made 23 amendments in forest, wildlife, and biodiversity conservation laws, environmental laws, mining laws, and brought new carbon and green credit rules for facilitating green imperialism in India's forest. Therefore, in this session, our speakers will focus on how land and forest laws, technocratic policies, and the schemes are used by the state in its attempt to dispossess Adivasi and forest dwelling people from their land, to make land easily available to the corporates for mining, industrial, and other developmental activities. Our speakers will discuss the politics of two key aspects of weaponization of land and forest legal regimes. I will now invite Dayamani Barlaji first to speak on the issue of digitalization of land records, the associated land bank policy, and Swamitva scheme in Jharkhand. She will discuss underlying tactics of the Indian state to dispossess Adivasi from their land through these techno-managerial and bureaucratic attempts to survey, map, and mark land. She will also discuss how Adivasi people in Jharkhand are resisting these techno-managerial plans of the government to loot their land and make it available to the corporates. दयामनी जी, अगर आप रेडी हैं तो फिर आप अपना शुरू कर सकते हैं वक्तव्य जो आपको कहना है। सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। आज के इस वेबिनार में लोटिका जी, पूजा जी, उषा जी, विजय जी और उसके साथ जितने भी आज के इस वेबिनार में जो पार्टिसिपेट किए हैं, सभी साथियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और आज का ये जो विषय आप लोगों ने रखा है, जहाँ पूजा जी ने एक तरफ जिस तरह से माओइस्टों के बारे में या तो उनके स्किन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं जो आपने हमें विषय दिया है उस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। और झारखंड को सबको जानते हैं कि ये आदिवासी बहुल प्रदेश है और झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश के साथ है। झारखंड को सभी जानते हैं कि झारखंड एक आदिवासी स्टेट है और आदिवासियों के बारे में, इंडिजिनस समाज के बारे में सबको ये इतिहास को जानते हैं। बहुत कम लोग नहीं जानते हैं कि आदिवासियों का इतिहास ही दूसरे समाज से, आदिवासियों का इतिहास अलग इतिहास रहा। आदिवासी आप वर्ल्ड के जिस भी हिस्से में चले जाइए, इंक्लूडिंग झारखंड में, तो सभी जगह आपका आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो जंगल के खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवरों से संघर्ष करके जंगल को साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, गांव बसाया और अपने लिए एक सुरक्षित एरिया उन्होंने चिन्हित किया। और जिस भी इलाके में आदिवासी समाज ने अपना गांव व्यवस्था, गांव को का विस्तार करते गया, अपने गांव को चलाने के लिए, गांव को डिसिप्लिन में रखने के लिए और गांव को के साथ अपना जो जल जंगल जमीन है, जो प्रकृति के साथ रचा बसा हुआ है, उस प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, उस प्रकृति को का विकास करने के लिए और प्रकृति के साथ उनका जो भाषा, संस्कृति और जीविका जो जुड़ा हुआ है और पर्यावरण का जीवन शैली के साथ इनका रीति रिवाज, उनका सामाजिक व्यवस्था जो जुड़ा हुआ है, उस तमाम जो उनका धरोहर है,
उसको संरक्षण करने के लिए अपना सामाजिक व्यवस्था बनाए और उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आदिवासी समाज ने अपना सिस्टम बनाया और अपना सिस्टम के तहत यहाँ पर आदिवासी समाज झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल, ये आपका विशेष रूप से है। मुंडा विशेष रूप से जो मेन समुदाय के रूप में माने जाते हैं। पूरे भारत की बात करेंगे तो 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं। लेकिन ये आदिवासी समुदाय का ही उनका जो अपना सामाजिक व्यवस्था है, जो जहां पर उन्होंने जंगल बाघ भालू से जंगल को साफ करके लड़के साफ करके बनाया, उसको अपना ट्रेडिशनल राइट्स वहां पर माना। उस जमीन के ऊपर में अपना खुटखटी राइट्स माना और उसी को हम लोग खुटखटी राइट्स बोलते हैं। और उस खुटखटी राइट्स में हम लोग जमीन का जो जंगल पर, जमीन पर नदी है, पहाड़ है, इस पर हमारा सामुदायिक अधिकार हम लोग मानते हैं। और जहां पर हमारा सामुदायिक अधिकार है, इस अधिकार पर जब हमला किया अंग्रेजों ने और हमारा सामुदायिक अधिकार पर जब हमला करना शुरू किया और जो सामुदायिक अधिकार को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के रूप में जब कन्वर्ट करने का कोशिश किया और उसी के स्वरूप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरे देश में यहाँ अपना बिजनेस चलाने के लिए आए तो झारखंड में भी अपना हमारे समाज के ऊपर में उन्होंने हमला करना शुरू किया और हमला करना शुरू किया तो उसी के जवाब में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आपका 1700 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी से लेके आपका लगातार यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष हुआ और वो आदिवासियों का स्वशासन के का संरक्षण के लिए वो शासन हुआ। आदिवासियों के अपने जंगल पर अपना जो परंपरागत अधिकार है उसकी रक्षा के लिए संघर्ष हुआ। और सबको जानते हैं कि झारखंड में इतिहास में हम लोग 30 जून 1856 जहां पर हमारा संथाली आदिवासी भाई लोग अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा और वहां पर 25,000 से ज्यादा आदिवासी समाज के बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सबको मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जब संघर्ष कर रहा था, वो अपने सीने में गोलियां खाया और वो शहादत दिए। उसके बाद वो संघर्ष आगे बढ़ा, आपका दक्षिण क्षेत्र में बढ़ा, जो मुंडा इलाके में, तो बिरसा मुंडा के अगुवाई में यहाँ मुंडाओं का उलगुलान हुआ और फिर पश्चिम इलाका में चला तो वहां आपका वीर बुद्धू भगत है, तेलंगा खड़िया है और उसके साथ ही आपका दक्षिण इलाके में चला गया आंदोलन तो वहां पर पोटो हो और आपका सिंदरा मानकी, बिंद्रा मानकी के अगुवाई में आंदोलन हुआ। तो ये तमाम जो आंदोलन हुए जल जंगल जमीन पर अपना स्वशासन का व्यवस्था को बरकरार रखने का जो आंदोलन था और वही आंदोलन आज भी आदिवासी समाज को जिंदा रखा है। और आज जिस लैंड डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, भूमि बैंक की बात को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आज तक आदिवासी समाज, चाहे वो समाज की बात करेंगे, चाहे आप उरांव समाज की बात करेंगे, चाहे तो आप मुंडा समाज की बात करेंगे या तो आप संथाल समाज की बात करेंगे, सबका आज की तारीख में अपना परंपरागत अधिकार के तहत ही उनका भू अभिलेख भी है। लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स, भू अभिलेख हमारे परंपरागत अधिकार के तहत ही गांव का विलेज नोट है और पूरे गांव के लिए खतियान है और वो खतियान में हमारा पूरे गांव का जो सामुदायिक अधिकार है वो वहां पर वर्णित है कि जंगल का उपभोग कौन कर सकता है, मिनरल्स का उपभोग कौन कर सकता है और यहाँ चरागाह है, नदी है, पहाड़ है, उस जमीन का उपयोग कौन कर सकता है, ये हमारा खतियान पार्ट 2 में है। और आज भी हमारा जो ट्रेडिशनल राइट्स के आधार पर हमारा मानकी मुंडा, जहां पर आपका कोल्हान इलाका है, वो इलाका, वहां पर कोल्हान इलाके में आदिवासी समाज का जो लैंड है, लैंड पे रेवेन्यू का जो ये सिस्टम है, आज भी वहां गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है। आज भी लोग वहां पर चंदा उठाते हैं और चंदा सेस के रूप में
पूरे गांव को, वहाँ जो मानकी मुंडा है, जिनको गांव के अपना पीढ़ का, उस एक पीढ़ में कई गांव होते हैं, उनका अधिकार दिया गया है। और वो वहीं से शुरू कर रही हूँ कि जो हमारा अंग्रेजों ने जो व्यवस्था थोपने की कोशिश की कि ये जमीन पर जब टैक्स व्यवस्था थोपने का कोशिश किया आदिवासियों के ऊपर में, लेकिन आदिवासी समाज ने उसका कड़ा विरोध किया। और ये कड़ा विरोध वहीं से शुरू हुआ जो मैंने आंदोलन के बारे में आप लोगों के बीच में रखी। और आज भी उसका जो देन है कि ये लोगों ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने उस समय स्वीकार किया। और ये जो 1800 आपका 36 में आपका खुटखटी राइट्स हमारे मुंडा आदिवासी समाज को मिला कि हमने, आदिवासियों ने अंग्रेजों का रेंट सिस्टम को स्वीकार नहीं किया। और उसी के बाद हम लोग ये मुंडारी खुटखटी अधिकार को हम लोग को आज भी हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ जहां पर वो समुदाय की बात करेंगे तो मुंडा और मानकियों को भी अपने क्षेत्र का जमीन का रेंट आपका काटने का मुंडाओं को अधिकार है। और खुटखटी क्षेत्र में भी मुंडाओं को, वहां का जो विलेज हेडमैन है, उनको काटने का अधिकार है। और उसी तरह से आप संथाल परगना में जाएंगे तो माझी और परगना को, उनको अपना जमीन का रेंट काटने का अधिकार है। और गांव के लोगों से शेष जमा करने के बाद वो सरकार को देते हैं। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और यहाँ झारखंड में 2014 और 19 के बीच में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही। मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि आज 2014 से जो सरकारें केंद्र में आई, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो जिस तरह से देश में जितने भी सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं, उनको कारपोरेट के हाथ में देने का जो लक्ष्य था। और उसी के तहत मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को पहला कानून लेके आया। और वो कानून लैंड ऑर्डिनेंस के नाम से जाने लगा। और 2013 में जो यूपीए की गवर्नमेंट ने जो पेशा आधारित दिया, तो यहाँ पर हमारा सीएटी एक्ट के आधार पर जो कानून व्यवस्था यहाँ पर लाने का लाया था, उस कानून को खारिज करते हुए 2014 में ये लैंड ऑर्डिनेंस लाया। पूरे देश के किसानों ने और जो आम जनता जो थे, और जितने भी किसानों के जो समर्थक थे, सभी ने इस लैंड ऑर्डिनेंस का, और जो कारपोरेट राजनीति के खिलाफ है, सारे लोग मिलके पूरा गांव से लेके आपका पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर तक इसका विरोध हुआ। पार्लियामेंट में कड़ा बहुत विरोध हुआ, जिसके चलते ये लैंड ऑर्डिनेंस को मोदी सरकार ने पास नहीं कर सका। लेकिन सभी राज्यों को ये कहा कि ये जो हम लैंड ऑर्डिनेंस लाए हैं, वो हम पास नहीं कर पा रहे हैं बिल के रूप में। लेकिन हर राज्यों को हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी राज्य हैं, इस कानून के तहत में, लैंड ऑर्डिनेंस के तहत जो अपने राज्यों का कानून को लाना चाहते हैं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। और ये झारखंड के लिए यह दुर्भाग्य था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी से रघुवर दास की सरकार थी। उन्होंने ऑर्डिनेंस के आधार पर ही 2013 के कानून को दरकिनार करते हुए ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम को का शुरुआत किया 2013-2014 में। और 2014 के बाद से पूरी तरह से झारखंड में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। और जितना भी लैंड रिकॉर्ड थे, उनको डिजिटलाइजेशन किया। और उसके बाद इसके पीछे का जो उद्देश्य था, इसके पीछे का उद्देश्य था केंद्र सरकार का वन नेशन वन लॉ के नाम पर पूरे देश के जो जमीन है, उन जमीन के दस्तावेजों को एक आपका सॉफ्टवेयर में लाना। और इस सॉफ्टवेयर में लाने के लिए ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। और ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम जैसे शुरू हुआ, झारखंड में आदिवासियों का जमीन का लूट का
एक नया रास्ता खोल दिया गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर लैंड बैंक शुरू बनाया और लैंड बैंक शुरू किया। ये सीएनटी एक्ट जो हमारा जमीन का सुरक्षा कवच है उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए, और यहाँ पर ये 5वां अनुसूची का क्षेत्र है और 5वां अनुसूची में पेशा कानून का क्षेत्र है और ये ग्राम सभा का जो अधिकार है, इन तमाम अधिकारों को किनारे करते हुए इन्होंने लैंड बैंक बनाया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लैंड झारखंड सरकार का जो झार भूमि लैंड बैंक में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा 22 लाख एकड़ से ज्यादा। यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के जमीन थे, चाहे वो जंगल था, झाड़ी था, गैर मजरूआ आम जमीन था, खास जमीन था, और वो आपका नदी है, नाला है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, सरना है, मसना है, हरगड़ी है, यहाँ तक कि चर्च है, मंदिर है, मस्जिद भी है, सभी को उन्होंने एक एक प्लॉट को चुन चुन के लैंड बैंक में डाल दिया। और आज की तारीख में ये जो लैंड बैंक है यहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा जमीन लूटने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने दरवाजा भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिया। आज यहाँ पर 5वें पूरे झारखंड में रातों रात जमीन का जो रिकॉर्ड है उस जमीन का रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हो रहा है। हर गांव में आप जाइएगा तो हर गांव में 50 से 60% आदिवासियों का जमीन उनके उनके जो अपने जमीन का मालिकाना हक को छीन के दूसरे लोगों के नाम से जमीन का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, पंजे 2 में उनका नाम चढ़ाया जा रहा है। और आदिवासी आज बिना बुलडोजर चलाए हुए, बिना उनके ऊपर में आक्रमण किए, आज यहाँ पर आदिवासियों का जमीन पूरे झारखंड में एक ब्लॉक का मैं बताना चाहती हूँ, खूंटी जिला में कर्रा ब्लॉक है, कर्रा ब्लॉक में 70% जमीन है वो आपका इस प्रोसेस से आदिवासी इलाके का जमीन गैर आदिवासियों ने कब्जा कर चुका है। दिन और रात इसके लिए, और ये जो लैंड बैंक के नाम से जो बना लैंड बैंक जो बना उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सीधे कहना है कि लैंड बैंक कारपोरेट घराने को जब चाहेंगे वहां जहां चाहेंगे वहां, जब चाहेंगे तब जो जमीन चाहेगा उनको बिना डिले किए, बिना विवाद हुए हम जमीन उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसलिए लैंड बैंक के साथ उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया। आज की तारीख में ये लैंड बैंक और सिंगल विंडो सिस्टम आदिवासियों को पूरी तरह से झारखंड से खत्म करने की का एक बड़ा दरवाजा खोल के रखा है। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मोदी सरकार पूरे देश में वन नेशन वन लॉ के नाम पर बहुत सारे कानून ला रहे हैं। और ये वन नेशन वन लॉ के तहत ही लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम उन्होंने चलाना शुरू किया। और उसी के तहत इन्होंने जब जमीन को उन्होंने देखा कि आदिवासी इलाके में बहुत सारा जमीन है वो किसी के नाम से नहीं है, और वो ऐसा जमीन है जो आज हमारे सिस्टम में आदिवासियों का जो परंपरागत जमीन सिस्टम है, लैंड का जो हम लोगों का ट्रेडिशनल लॉ है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, उसके आधार पर है। जितना भी खतियान पार्ट 2 में जमीन है वो कोई एक आदमी के नाम से नहीं है, वो समाज के नाम से है, समुदाय के नाम से है। लेकिन आज इन तमाम जमीनों के लिए मालिक ढूंढना चाहता है मोदी सरकार, इसीलिए देश में मोदी स्वामित्व योजना चलाने का उन्होंने 2020 में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लाया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं और लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम करने का जो उद्देश्य था मोदी गवर्नमेंट का, वो उसमें वो आगे बढ़ रहा है। अब आज की तारीख में आप सब कुछ जान रहे हैं कि आज से 2 साल पहले, मतलब आपका 22-23 की बात करेंगे तो पूरा देश जान रहा है कि आपने सड़क बेच दिया, आपने रेल बेच दिया, पटरियां बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया। उसके बाद आपने जितना भी मतलब पब्लिक का प्रॉपर्टी था उसको आपने
अडानी और अंबानी को देना आपका पहला प्राथमिकता रहा, आपने दे भी दिया। और आज की तारीख में जब आप स्वामित्व योजना जो आपने प्रोजेक्ट के रूप में चलाने का कोशिश किया, तो हमारा जो सामुदायिक जमीन है, जिसमें आपने बढ़िया से इसको ट्रांसलेट भी किया अपने साथियों के लिए, कि आप ये जो सामुदायिक जमीन है वो हमारे पूरे समाज के लिए है। नदी का उपयोग सारे लोग करते हैं, नाला का उपयोग सारे लोग करते हैं, और खेल मैदान का उपयोग, जंगल का उपयोग, पहाड़ का उपयोग सब कोई करते हैं। शुद्ध हवा सबको को चाहिए, शुद्ध पानी सबको चाहिए, शुद्ध भोजन सबको को चाहिए। और यही हमारी सामुदायिकता है। और आदिवासी कल्चर का सबसे ट्रेडिशनल हमारा जो कल्चर है, ये सबसे बड़ा हमारा दूसरे समाज से अलग करता है। और इसीलिए हम जल जंगल जमीन को अपना धरोहर मानते हैं। और जल जंगल जमीन को लेके हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, आज भी हम लोग बड़ी बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ, और जितने भी सरकार जबरन हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती है, परियोजना लाती है, जहां से हमारा बड़ा बड़ा गांव, मैंने यहाँ पर हम लोग ने कोयलकारो परियोजना के खिलाफ हम लोगों ने 250 गांवों को बचाने का लड़ाई लड़ा। यहीं पर हम लोगों ने नेतरहाट फिर फैरेंगे रेंज से बचाने के लिए गांवों को, हमारे साथियों ने 245 गांव को बचाने का लड़ाई लड़ा। तो पूरे झारखंड में आदिवासी लोग अपना जल जंगल जमीन को धरोहर मानते हैं। धरोहर नॉट सेलेबल, ये हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है, ये हमारा धरोहर है, जिसको हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया, हम जो एंजॉय कर रहे हैं, ये धरोहर का एंजॉय हम अपने अगले पीढ़ी के लिए रखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जहां पर भी जल जंगल जमीन की बात होती है, तो आदिवासी समाज पहला पंक्ति में खड़ा होके वो विरोध करता है। और सरकारें जब कहती है कि हम पैसा देंगे, नौकरी देंगे, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा हवा का आप कोई मुआवजा नहीं दे सकते हो, हमारा पर्यावरण का आप कोई मुआवजा नहीं दे सकते हो, हमारा खेती का जमीन का, हमारा नदी का नाला का आप मुआवजा नहीं दे सकते हो, हमारा धार्मिक स्थल सरना का, संस्कृति का, सरना का, मसना का, हड़गड़ी का आप उसको किसी मुआवजा से नहीं पाट सकते हो। और हम लोग इसी लाइन पे आज भी पूरे झारखंड में जितना भी आदिवासियों का आंदोलन है, हम लोगों ने आंदोलन जीता है। लेकिन आज मोदी सरकार इन तमाम हमारा जो धरोहर है, उस धरोहर को आदिवासियों के हाथ से गैर आदिवासियों के हाथ में, और जितने भी देशी विदेशी कंपनियां हैं उनके हाथ में देने के लिए ही जो यहाँ पर स्वामित्व तो आप बोल रहा है कि यहाँ पर जो जमीन है, ये जमीन का कोई आदमी नहीं है, कोई एक व्यक्ति के नाम से नहीं है, तो इसका मालिक कौन होगा? अब ये मालिक ढूंढने के लिए ही इन्होंने यहाँ पर 2021 में ड्रोन सर्वे शुरू किया। ड्रोन सर्वे शुरू किया और ये जमीन को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया कि, और वो जमीन को आइडेंटिफाई करके ये उन्होंने जितना भी हमारा जो सामुदायिक जमीन है उसको अपना प्रॉपर्टी बनाने के अपने हाथ में लेने के लिए, और जो हमारा नाम से अपना जमीन है, जिसको हम लोग अपने जो पारिवारिक या तो खानदानी जमीन बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरे परिवार मैंने खानदान, वो भी सामुदायिकता के आधार पर अभी भी है, उसी जमीन पर अगर वो ड्रोन सर्वे का उद्देश्य था कि हम यहाँ पर कितने लोग हैं, कितना परिवार है, उनके पास कितना जमीन है, और उस जमीन के आधार पर हम लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देता। जिस तरह से उन्होंने आदमी का आधार कार्ड बनाया, उसी तरह से 14 डिजिट का जमीन का वो आधार कार्ड बनाने का ये लक्ष्य है। और ये आपका लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है। और इसी के लिए इन्होंने ड्रोन सर्वे पूरे देश के साथ झारखंड में भी शुरू किया, लेकिन पूरे देश के लोगों ने, दूसरे देश के राज्य के लोगों ने इस मामले को नहीं समझ सका। लेकिन हमारा आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच लगातार पहले ArcelorMittal के खिलाफ संघर्ष किया, और 2008 का
समाज से लड़ाई लड़ रहा है और दिन रात हम लोग गांव के लोगों का जमीन का संरक्षण कैसे होगा, उनका जो लैंड रिकॉर्ड में जो उनके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण कैसे होगा, हमारा 5th शेड्यूल का संरक्षण कैसे होगा, इसको लेके लगातार हम लोग जूझ रहे हैं। तो हम लोगों को यह जल्दी से समझ में आया जब झारखंड में यहाँ खूंटी जिला में 700 जो 27 गांव है रेवेन्यू विलेज, उसका वो ड्रोन सर्वे करना शुरू किया। जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने पूरा स्वामित्व योजना का जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो हम लोगों ने गूगल में भी खोज के निकाला और उसको डाउनलोड भी कर किया, और जो सरकार के पास था उसको भी हम लोग अपने हाथ में लिए और गांव के गांव हम लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया और हम लोगों ने कहा कि हमारा CND एक्ट के खिलाफ है, 5वीं अनुसूची के खिलाफ है, हमारा ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के खिलाफ है। हम लोगों ने इसके बाद लोगों को गोलबंद करके हम लोगों ने ड्रोन सर्वे का भी हम लोगों ने कहा कि जब 5वीं अनुसूची में गांव को अधिकार दिया गया है कि गांव में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट को हम लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे, ये गांव फैसला करेगा। लेकिन गांव के लोगों से बिना पूछे आप ड्रोन सर्वे करा रहे हैं, तो पूरा गांव के गांव पूरा क्षेत्र का ग्राम सभा उठ के खड़ा हुआ और ड्रोन सर्वे करने से हम लोगों ने रुकवाया। हम लोग अपने जो झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन पिछली सरकार थी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपने माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों ने सबके पास इस बात को रखा कि ये कितना खतरनाक है, तब इस चीजों को देखते हुए पूरा दस्तावेज हम लोग सभी को दिए और विनोद सिंह ने पूरा दस्तावेज को स्टडी करने के बाद विधानसभा में सवाल उठाया और विधानसभा में जब सवाल उठाया 10 मार्च 2022 को, तब उस दिन ड्रोन उड़ रहा था खूंटी जिला में। खड़ा होके विनोद सिंह ने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ा और ये कि ये 5th शेड्यूल का इलाका है, आदिवासी इलाका है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से डिजिटल सर्वे जो चल रहा है वो अभी होल्ड किया जाए, और उस दिन से आज तक उसको रोक दिया गया है। ये जो लैंड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम या तो वन नेशन वन लॉ के नाम पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज भारत में, ये झारखंड केवल नहीं लेकिन पूरे भारत देश का अब एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर आदिवासी समाज में हमारा जो अपना जो लैंड रिकॉर्ड्स था उनको उन्होंने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत हमारा जो अधिकार था उसको जिस तरह से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर में लाया, अब इस सॉफ्टवेयर का मालिक NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। अब ये सॉफ्टवेयर को जब चाहेगा तब वो ओपन कर सकता है और नहीं चाहेगा तो ओपन नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज जो भी गलतियां लैंड रिकॉर्ड और डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान हमारा खतियान में छेड़छाड़ हो गया है, हमारा पंजी 2 में छेड़छाड़ हो गया है, हमारा जमीन गायब हो गया है, हमारा जमीन दूसरों के नाम से चढ़ाया गया है और उसको अभी सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग बहुत उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग अभी का जो वर्तमान सरकार है उनके पास भी बार बार हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो वन नेशन वन लॉ के नाम पर जिस तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका मालिक आपका NIC है, तो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक पूरी तरह से आपका ये जमीन पे सुधार नहीं हो सकता है। झारखंड के लोग तो हम लोग इसमें झेल रहे हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं इसको लेके। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड को, ये जो भूमि बैंक है उसको आपको हर हालत में ये खत्म करना होगा। हम लोग मोदी सरकार ने इनको बनाया है तो केंद्र सरकार को भी ये इनका अधिकार है कि इसको खारिज करे और अभी तक खारिज नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज लैंड बैंक के द्वारा आज पूरे झारखंड में गैर आदिवासी समाज का एंट्री हो गया है। पूरे झारखंड के आदिवासी गांव में गैर आदिवासी समाज एंट्री कर गया है। ऐसे ही आदिवासियों का जनसंख्या आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर आपका 2 करोड़ से ज्यादा विकास के नाम पर पहले ही यहाँ के आदिवासी
मूलवासी विस्थापित हो गए हैं और पलायन के शिकार हो गए हैं। और आज ये जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत जिस तरह से जमीन लूटा जा रहा है, आज रोज बिना आपका, पहले ही मैं बोली थी कि बिना बड़ा कारखाना को लाए ही गांव के गांव में बाहर के लोग घुस रहे हैं। हमारे सीधे साधे हम लोगों के पास पैसा नहीं है, खेत है, खलियान है, हम लोग किसान है, पैसा वाले वहां पर माफिया के साथ मिलके और जितने भी ब्यूरोक्रेट है उनके साथ मिलके तमाम जमीन को अपने नाम से कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में ये भारत में या झारखंड की बात करेंगे, 1950 ईस्वी में यहाँ पर जमींदारी प्रथा खत्म हो गया था, वो सबको जानते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया था, लेकिन झारखंड में नए सिरे से लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम में नए सिरे से नए जमींदारों को पैदा कर दिया है, नए माफिया को पैदा कर दिया है। और आज आदिवासी समाज तबाह तबाह हो गया है। और आज हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम लोगों का ये पांचवें अनुसूची का क्षेत्र है। पेशा कानून अभी उसका नियमावली ड्राफ्टिंग हो चुका है, लागू होने वाला है। लेकिन जब तक लैंड रिकॉर्ड, जब तक हमारा लैंड बैंक यहाँ कैंसिल नहीं करेगा, तो हमारा जमीन तो फंसा हुआ रहेगा लैंड बैंक में। हम लोग लैंड बैंक को हर हालत से हम लोग सरकार से खारिज करने की मांग कर रहे हैं। और मैं अंतिम में ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार लगातार बोलती है कि हम आदिवासियों का हिमायती हैं, आदिवासियों का को संरक्षण हम ही दे सकते हैं। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। आज हमारा आदिवासी राष्ट्रपति है, आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, हम लोगों को बड़ा जगह में बना दिया, लेकिन हमारे तमाम जो जमीन है हम आदिवासियों को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। जो हमारा अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, हमको फॉरेस्ट राइट मिला है, फॉरेस्ट राइट को भी आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदल के आप हमारा जमीन से भी, हमको जंगल से भी निकालना चाहते हैं। तो आज हम लोग जब बात करने के लिए बैठे हैं कि लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम या तो लैंड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम पूरी तरह से हमारा आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल राइट्स है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, और उसके साथ ही विल्किंसन रूल है, और उसके साथ ही आपका पांचवें अनुसूची में जितने भी हमारे तमाम अधिकार हैं, तमाम अधिकारों को यह लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम ने हम लोगों से छीनने का काम किया है। कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। देखिए यहाँ पर सब कुछ को समझने की जरूरत है। हम लोग संविधान के तहत जीते हैं, संविधान ने अधिकार हम लोगों को दिया है, लेकिन आज की तारीख में आपने संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार है उन्हीं को आप खारिज कर रहे हैं। तो अगर आज आप लोग के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अपना बात रख रही हूँ, तो तभी हम फ्रूटफुल मानेंगे कि इसको लेके हमारे आदिवासियों का को लेके झारखंड में क्या हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार पर भी हम सब मिलके अपना दबाव बनाएंगे, तब ये तमाम चीजें ये संभव होगा कि आज का जो हम लोग बात रख रहे हैं आपके बीच में उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। नहीं तो यहाँ तो धर्म के नाम पर, ईसाई के नाम पर, सरना के नाम पर, आप तो यहाँ पर जातीय हिंसा भी मणिपुर की तरह आप आरक्षण के नाम पर आप कराने जा रहे हैं। तब ये हमारा झारखंड का जो आदिवासी ताकत है, एक तरफ से आप जमीन जंगल छीन ले रहे हैं, आप दूसरे तरफ से आप हमारे समाज में जातीय हिंसा भी आप करा रहे हैं। जी जी दयामणि जी, दयामणि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से हम लोगों को पूरा अपना विश्लेषण बताया कि आज सरकार किस तरीके से आदिवासियों की जमीन लूट रही है। I now invite C.R. Bijoy to produce a big picture analysis of the attempts made by the Indian state to monopolize its control over natural resources, including forest and common land, leading to accumulation by dispossession of Adivasi and forest dwelling people.
He will discuss the underlying intentions of the state in monopolizing its control of resources and weaponizing law as a tool for grabbing resources from Adivasi and forest dwelling people. He will also discuss the way Adivasi movements have resisted states' lawfare and other tactics of resource grabbing. Bijoy, are you here with us? Greetings to all of you. Yeah. Can you hear? Hi. Yes, yes, we can hear you. Yeah. Thank you for waiting. Just, Yeah. no, sure. Greetings to all of you. I just would touch upon one of the key things that Dayamanaji kept on mentioning right from the beginning till the end, which is the relationship of Adivasis to the land and the aspect of rights of governance. The first thing that we need to understand is, unlike the mainstream, for the Adivasis, land, natural resources, governance, community, and all these things are together. It is not separated. And the reason why it is so is that their perception is, or their premise, fundamental premise is, land cannot be owned by individual or even by communities. People belong to the land doesn't belong to the people. The manner in which the community is organized and governance systems evolve is based upon the manner in which this community uses the land for production, and what the product of the labor, not only physical aspect, but also even the mental product of labor, is not individually owned or owned by the family. It is collectively owned and enjoyed. So it's a sort of a communitarian mode of production. And so the governance system that evolved suited to such kind of a communitarian mode of governance had to have participatory democracy as a fundamental principle, a face-to-face gathering of people to decide, and a notion of leadership or a chieftainship where the chief of the village is not the deciding authority, but is only the executing authority. What the Gram Sabha decides, the leaders or the chiefs of the village execute. So this is the basic aspect of their governance. So in essence, what we are talking about is that the political autonomy is fundamental in terms of deciding their relationship to the land, in terms of deciding their relationship, the social relationship amongst themselves, their relationship with the external world. And this kind of a system of governance had continued, had persisted consistently all along through various phases of human civilization. It continued to persist, and it is also reflected to some extent in domestic and international laws too. So the persistence that it did persist simply is sufficient evidence that what we call as the indigenous people or Adivasi people are those who did not become part of the feudal mode of production, neither enslaved others, nor not generally got enslaved by others, and that they are not part of the modern capitalist system, and that they would prefer to have their own economic systems and their own political systems, which is internationally now part of the law under the UN Declaration of the Rights of Indigenous People. This is the general principle. So it is natural that when you talk about land, you're actually talking about the people, you're also talking about the governance or the traditional governance. Now, the persistence of these tribal communities in India
or the Adivasi communities in India, that they continue to insist that this is the way they want to govern themselves, is evident, the evidently clear that through the varieties of laws that emanated from the British period all the way to the present, on which I will go at the later stage. Now, going on to the next part, with in terms of land and natural resources, just to give an idea about, briefly about an idea about, what, giving forest as an example. It was in 1996 that the Supreme Court, in the famous Godavarman case, defined forest land as not only what it means by the dictionary, but also any records, land records, where the term forest is used. According to one estimate, nobody really knows the exact figure. According to one estimate, it's something like about 1.99 lakh hectares of forest land, of land has been added to what was otherwise understood as forest. In other words, it expanded the physical domain of the forest bureaucracy. It was a big, it was a boon for the forest bureaucracy that suddenly, all of a sudden, there's a huge chunk of land which is under their control. And 10 years later, you find another issue that comes up, is that the Forest Rights Act was enacted in 2006 and got operationalized in 2008. And the Ministry of Environment reckoned, using various data that was existing, that about 40 million hectares of forest land, which is more than half of India's forest, would have to be transferred to village level institutions, and all existing foreign laws has to be amended to be in tune with the Forest Rights Act. Maybe if you look at in terms of how much land has actually been titled, maybe about 10% of this 40 million has been titled. Now, then comes in 2023, the Forest Conservation Act 1980, which is a law which actually facilitates deforestation through diversion of forest land for non-forestry purposes, even though ironically the title is Forest Conservation Act 1980. Why I mention it so specifically is that some of the recent data shows very clearly that less than 1% of proposals for forest diversion has actually been rejected. In other words, most proposals are passed through. In fact, steps have been taken to ensure that the forest clearance is rapid, it's easy, and that's what has been happening all along in the last, particularly in the last decade or so. Now, you see that there are many ways by which this Forest Rights Act is a problem, and one of the major ways is that the very idea of losing half of India's forest, the control over half of India's forest, from the forest bureaucracy, and therefore from the forest bureaucracy deciding what they should do with the forest. That was a pretty big blow. And there are two things that they try to do. One is that since the Forest Rights Act was enacted, there has been a series of orders and issues, which orders that were issued to the various state government, which is in violation of the Forest Rights Act. I'm not going into the. Bijoy, we can't hear you. Bijoy? Yeah? Yeah, we lost you for a bit. Can you hear now? Just a minute before. Yeah, sure. I was just mentioning that there has been a number of initiatives by the Ministry of Environment all along to checkmate the Forest Rights Act. I'm not going into the specifics about that. Some of the recent phenomena is very, very blatant. An example is
that on June 19, 2024, National Tiger Conservation Authority demanded the relocation of about 4 lakh forest dwellers from about 54 tiger reserves, in the country, which means something like about more than about 800 villages have to be relocated. When the law does not require relocation, all that is required is all that the law says is that if the people want to be relocated, they can approach, and the forest department has bureaucracy has to assist them in rehabilitation and relocation. But instead of that, what is happening is that there's a consistent forced relocation, which is recorded as voluntary relocation, and supported by documentary evidences by getting people to sign up, stamp papers saying that they want to be relocated. You also see, like, for instance, in Chhattisgarh, you had this recent incident when, the forest department declared itself as the nodal agency to control the customary and traditional forest area of each village. Roughly, it was estimated something like about over 20 lakh hectares of forest land, which from about 4,349 gram sabha, saying that the forest department is the nodal agency for managing this, when actually the law says it is the gram sabha which should manage. Of course, the Ministry of Tribal Affairs had subsequently clarified, no, it's under the purview of the gram sabha. Then you have the initiative of the bureaucracy, which includes also the forest department, saying that large tracts of forest land in Chhattisgarh is leased to the Forest Development Corporation. Over 2 lakh hectares is leased. So basically, what they wanted was that no more title should be no title or no forest right should be recognized in the forest areas which are leased to the forest department, and in areas which are already titled, areas which are leased to the forest department but already titled, there the Gram Sabha should not have the authority to decide on anything but allow the Forest Development Corporation to do what they want. You had, that is still hanging in the air. They also wanted to make sure that no future title should be issued on the forest lands which are leased to the Forest Development Corporation. Very similar across all of the country, you'll find large tracts of forest lands are leased out to varieties of corporation created by the forest department for cardamom, tea, coffee, rubber plantation, etc. So basically, to keep this out of the purview of Forest Rights Act, and that means out of control of the Gram Sabhas. Another instance is the Telangana Forest Department notifying 1,492 square kilometers as Tiger Corridor, saying that this is to link up the Kaval Tiger Reserve in Telangana with the Tadoba Mundari Tiger Reserve in Maharashtra. And this Tiger Corridor was to be notified under the Wildlife Protection Act as a conservation reserve, when the conservation reserve can only be notified on government land, where people do not have rights. And interestingly, in this particular patch of land, there are more than 339 villages. So which means obviously they have rights, obviously there might be title lands, there would be forest, rights land. Total disregard to the Wildlife Protection Act. This was decided, and then it had to be dropped because the people rose up in protest. There were, bunds in 2 districts, etc. In a similar vein, you can see that the National Green Tribunal, took up this issue of forest encroachment and asked what is the figure. And the Ministry of Environment simply asked all the state government to submit the data. Now, state governments submitted their data, and they said that as of March of 2024 last year,
the total figure that had emerged was 1.3 million hectares. When the very idea of encroachment itself has completely changed in law. What was initially the homelands of Adivasis were colonized by the forest department, and the people became encroachers in their homeland. And in 1990, these encroachers became eligible encroachers. They were supposed to be the title to the land was supposed to be given on encroached land, pre-1980 encroached land. So from encroachers, they become eligible encroachers, and since 2006, they are right holders. So obviously, the figure which is pre-2006, a figure where actual encroachment can only be determined only after the Forest Rights Act is completely implemented. Knowing this is the legal position, and yet disregarding the law, these figures are given by the state government and by the Ministry of Environment. So you have another, and the courts are very eager to protect the forest and to removal of encroachers. The Supreme Court has also now asked all the forest land that are under the control of the Revenue Department should be handed over to the Forest Department. Supreme Court in Rajasthan also declared that the sacred groves, which may be on forest land or on revenue land, should all be handed over to be under the control of the Forest Department. States like in Tamil Nadu, where the High Court has ordered saying that grazing should not be permitted in the protected area. So you see, a widespread disregard for laws, not only by the governments but also by the courts, including the Supreme Court. And all these are intended to transfer the land and forest land to the Forest Department under the pretext that the Forest Department's sole job is to protect the forest and the wildlife. It is true that the extent of land, that is about 5.5% of the total land area in the country is now under the protected area regime, which is about more than a quarter of India's forests are already under the protected area regime, where legally speaking, Forest Rights Act negates all restriction of rights under all pre-existing laws, including the Wildlife Protection Act. Despite that, the idea, disregarding the Forest Rights Act, more and more national parks and wildlife sanctuaries are being created with the idea that their rights need not be recognized. At the same time, one will have to ask the question that why is this grabbing of resources becoming so intensive these days, and particularly in the forest regions? There are basically two reasons. One is the typical reason that that ecotourism perhaps has got the highest possibility of investment in the future, considering the small minuscule percentage of the global affluent have too much leisure in their hand and too much money in their hand to expend. So ecotourism, and particularly focused on iconic animals like elephants and tiger, and now, of course, cheetahs being brought into the list. And this is on the one hand. There's another thing is all the issue of the carbon credit, which was earlier mentioned by Pooja, that a scheme has been manufactured. That's the carbon credit trading scheme. Rules have been brought out. What do you call systems and programs to promote tree plantation, not only in the forest areas but also outside. Dhyamani mentioned about land bank. Now, just a few days back, the Maharashtra revenue minister also declared that they are going to enact a law which will allow tribals to lease out their land. It isn't mentioned whether it is revenue land or forest land. Lease out the land, including for mining, so that the people will get monetary benefit and that there will be external investment on it. The formulation for green credit calculation
has also been worked out, etc. Similarly, you find that the mining provisions in mining has been made little more easier, extraction, exemption for extraction of atomic, critical, and strategic minerals, which probably threatens states like Meghalaya, where there is supposedly a huge deposit of uranium. You'll find many offenses, forest-related and environmental-related offenses, being monetized. Now, how do we understand monetization? To put it bluntly, it simply means that there are a set of people who regularly violate these provisions, are having a lot of money in their pocket, and so why not, instead of locking them up or exempt that and make them pay a certain fine. In other words, it also legitimizes something which has been in practice, though not lawful. Meaning that when people get caught, they give it and they make a payoff and get off off from the case. Now, all that is all happening is that these are brought into the law or legitimized. What was illegal earlier has now been legitimized, so it becomes easier. That is one part of the thing that is happening across the environment, across the land related. It is also true that other than the forest land, you have revenue land, and there are many, many laws, state laws. There are some states which does not have law at all to protect tribal land. In almost all the laws, it says that with the district collector or the commissioner's permission, the land can be alienated. You'll find, except in Maharashtra, where the governor used the power under Article 244, the fifth schedule, and issued an order stating that the collector can only permit alienation of tribal land if the Gram Sabha, gives consent. So other than that, in most other places, these laws are there. Laws are not necessarily, implemented, etc., etc. Now I come to the final part of the overall analysis. So can you actually clarify that for me, Bijoy? Like this, Which one? land grab in the name of like tiger reserve expansion and mining and all the different excuses. Is that going against the existing forest laws or? See, it's a very complicated. First of all, if we are talking about forest laws, you'll find that the forest, the procedure for notification of the forest is normally not being done by the British and subsequently the Indian independent. So you have, first of all, the forest is not notified fully as per the law. On the forests which are notified, you are now notifying national parks and wildlife sanctuaries, recognizing that procedures are not followed. Here too, you are supposed to be, recognizing rights and settlement of rights, which are also not done. Okay. Then on top of that, you have the tiger reserve notification. Now the tiger reserve notification also says that again rights have to be recognized, etc. All the 58 tiger reserves in this country are 100% violation of the Wildlife Protection Act. I mean, to give an overall picture, what is happening across the country, we need to understand the basic some of the basic aspects of the country. The first thing is that pre-British, during the princely states, you'll find that largely there are two typologies of governance. One is the governance structure, of landlordism, where caste structures was the basis on which the societies were, existing. Then you have another category where people kept away from this feudal system, which happened, who are now called as Adivasis, and they have their own system of governance based upon people belong, as I mentioned earlier, people belonging to the land, a participatory governance system. When the Britishers, even when the Adivasi regions were part of the princely kingdoms, they were only nominally part of it, or they were in the periphery, they kept out
from the system. This is the first thing. When the Britishers came, the colonial incursion into the forest areas, particularly into the tribal areas, were resisted. And as a result of these kinds of resistance, two things emerge. The first is that, as Deyamaniji mentioned, you have in 1837 the Wilkinson Rule in Chaibasa, which literally recognized that the people can govern themselves. You had the inner line permit in the northeast covering Arunachal, Mizoram, hill areas of Manipur, Nagaland, etc., which regulated the entry of outsiders, and even if they enter, they cannot what they call own or take over any land. Then you had the Scheduled District Act of 1874, the 1876 Santal Parganas Tenancy Act, 1908 Chota Nagpur Tenancy Act. So all these things basically provides a certain element of autonomy to the Adivasis over their land, resources, and their own community. And this was largely broadly categorized into what you call as the Excluded Areas Act, largely in the Northeast, and you have the Partially Excluded Areas Act in the central part of India. In other words, during the British period, the governors are responsible, to extend any law of the British. Now, the British laws were generally, in principle, not applicable to these areas until and unless the governor extends it with or without modification. Now, most often what happens was only some laws are extended, most laws are not extended. So in other words, the tribals, the Adivasis, continue to live in a free atmosphere. Then subsequently, you find many of these elements being brought into the constitution as an Article 244, 5th Schedule, 6th Schedule. You had 371A for Nagaland, 371G for Mizoram, which provided the certain level of freedom of control over land, natural resources, and governance. In the rest of the country, post-independence, what really happened was that there was already an colonial administrative structure and laws. And India being a vast country, it was decided that... Sorry, Vijay, to interrupt you, but Yes. would you like to summarize? Yeah, I'm doing that, just in a 2 seconds. Yeah. So what really happened is that the colonial administration continued with the idea that it would gradually be democratized, and the attempt to democratize and create a democratic system was through the 73rd Amendment, which did not fail, which completely failed because instead of the departments coming under the panchayats came under the department. Contrary to this, you had the Adivasis using the 73rd Amendment, getting the PESA enactment, and subsequently using the same framework of PESA, the Forest Rights Act, and put together, I would say that something like about 13% of land area and about 41% of scheduled tribes and about total of 6.2% of the total Indian population is actually living in these typologies of this governance, which is more of a self-rule based kind of a governance. And incidentally, in 2010, the Ministry of Panchayat Raj had recommended and formulated constitutional amendment saying that the best democratic laws that you have is actually the 5th Schedule and the 6th Schedule put together, and therefore why not make this as a system for the entire country to liberate India, the Indian masses from the colonial system that continues. Thank you. Thank you, Vijay. That was like you really provided a very good large-scale picture of what has been happening in India in relation to forest and the governance of Adivasi territories and resources. I thank Bijoy for his analysis, and like it came out very clearly that there's a tussle that is going on between the productive and counterproductive forces that are working in tandem. On one hand, the rights are getting recognized through certain laws, and on the other hand, the state is using different kinds of tactics. For example, the creation of tiger reserves that Bijoy was talking about, and or the
flaws in the declaration of forest or the protected areas, not following those processes. So these are the tactics that the state uses, various kind of tactics that the state uses, so that the Adivasi communities, they their governance is not realized. So thank you, Bijoy, and thank you everyone for being here with us. And uh, it's really like, we really appreciate your solidarity and present, and it matters a lot to us. There are specific questions for Dayamani ji and for Bijoy. So this question is, Dayamani ji has mentioned that we should pressurize the government for tribal rights. But I wanted to ask, how can we as a youth do that? Given the fascist nature of government and them curbing student politics in college. Not only that, but the youth has also been radicalized to hate all tribal and label them to be Maoist. At least the state where I live, UP. Also, if there is any way to help with the cause. दयामनी जी, आपने ये कहा कि हम लोगों को गवर्नमेंट को के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो आदिवासियों के हकों को हकों हक के हकों को वो करे, अ, उसको रिकग्नाइज करे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग, जो युवा लोग हैं, वो हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? और इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो जिस तरह की फांसीवादी सरकार है और जिस तरीके से उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे लगाम लगाई है कॉलेजेस में, तो उस बात को भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये बात भी है कि जितने युवा हैं उनको आदिवासियों के खिलाफ उनके मन में नफरत भरी गई है, ये कह करके कि वो सारे के सारे माओइस्ट हैं। और खास करके मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, वहां पे तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो युवा लोग हैं, वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? वो आदिवासी मुद्दों पे कैसे मदद कर सकते हैं? दयामणि जी, अगर आप हैं हमारे साथ तो आप इसका जवाब दे सकते एक हैं। मिनट, मैं एक क्वेश्चन और आया था पूजा बीच में, जो लिंक्ड ही है, तो मैंने सोचा साथ में डाल दूं। वो पूछ रहे हैं कि अच्छा। आदिवासी लोग क्या इंडिया में सिटीजन्स माने जाते हैं? कैन यू जी। जस्ट, हाँ, कैन यू जस्ट से दैट, या यू विल सी इट? जी। Are the tribals recognized as the citizen of India? क्या आदिवासी लोग भारत में नागरिक माने जाते हैं कि नहीं? जो भी जी, दयामणि जी, आपकी साथी, आवाज हाँ, नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है, हेलो, आ रही है। अब आ रही है। जी जी। मैं हमारे युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आप युवा किस तरह से आदिवासी समाज को आप सहयोग करेंगे उनके संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक याद दिलाना चाहती हूँ कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे युवा नेतृत्व लड़ रहा था, तो हम लोग हर नेतृत्व, युवा नेतृत्व को देखेंगे तो वो आपका 20 से 23 इयर्स का होगा। झारखंड में बिरसा मुंडा का माने उम्र था उस समय आपका 22 साल था। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव का भी उम्र 21-22 साल की थी। और वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने पूरे आदिवासी समाज का नेतृत्व किया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग उसको मानते हैं कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा सारे लोगों का उम्र 30 से 21 साल का था और उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। और उन्होंने अंग्रेजों को जो भारत छोड़ो स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा हुआ था पूरा देश में, उसका बड़ा हिस्सा माने बन गए। तो आज आप जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ियों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संघर्ष किया देश की आजादी के लिए।
और भारत के संविधान ने, आजाद भारत के संविधान ने हम हर जाति और धर्म को अपने तरह से जीने के लिए अधिकार दिया है, हर समुदाय को अधिकार दिया है, वह हर वर्ग को अधिकार दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय संविधान ने आदिवासियों को सीएनटी एक्ट का अधिकार दिया, 5th शेड्यूल का अधिकार दिया, 6th शेड्यूल का अधिकार दिया, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया, और पूरे देश में भारत के संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी, बोलने की आजादी दी, संघर्ष करने की आजादी दी, लिखने की आजादी दी। और अभी जो भारत के संविधान में, आपने, हमारे युवा साथी ने कहा कि आज जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी है, हमको संघर्ष करने नहीं दे रहा है, हमको लिखने नहीं दे रहा है, मेरे आने वाले पीढ़ी आप लोग हैं, इसी के खिलाफ तो सारा पूरा देश लड़ रहा है। और आदिवासी भी लड़ रहा है, मूलवासी भी लड़ रहा है, किसान भी लड़ रहा है, हर जाति और समुदाय लड़ रहे हैं। हम लोग भीमा पोरे गांव की के जो 16 साथियों को भी हम याद करेंगे, हमारे जो बेमुला साथी हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, आज हमारे साथी जेल में हैं, उनको, वो भी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और युवा साथी इस देश को हम लोग लड़ रहे हैं। आपका सहयोग हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आप संघर्ष में हमको मदद कर सकते हैं, तीर धनुष से नहीं। आज हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम संविधान को बचाने का संघर्ष करेंगे, और संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत ही हम लड़ेंगे। और ये जो संवैधानिक ताकत है वो सब फासिस्ट ताकतों को वही ध्वस्त करेगा। जी और आपने दयामनी जी। एक और सवाल किया कि भारत हाँ। में आदिवासियों को रिकॉग्नाइजेशन मिला है या नहीं मिला है। हम लोग एक तो दयानिधि मैडम, मेरा नाम शुभजीत बैनर्जी है, एडवोकेट। मैं सुंदरगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूँ क्योंकि हमारा प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट ये दोनों मैटर थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि हमारा इलाके जितने भी ट्राइबल एरियाज थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ हमारे जो माउंटबेटन के साथ और गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के साथ उस समय जो थे, तो हमारा इलाका को प्रोटेक्शन दिया गया था। जबकि वो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ही जब वायलेशंस हो रहा है और डिफरेंट लॉज यहाँ जो मतलब ये कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका एक्ट का जरूरी नहीं है इस एरिया में, तो उस एक्ट को लेकर के ट्राइबल लोग कैसे जिएंगे? जबकि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत ये कहा जाता है जो लिमिटेड लॉस रहना चाहिए तभी ट्राइबल मतलब सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स जी लोग का एक अलग से कस्टमरी लॉ है। तो उसमें ये जैसे आप डिफरेंट लॉज को जो मतलब आप थोप दे रहे हो, जैसे कोई भी जनरल लॉज जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और उसको आप मेरे ऊपर थोपते हो, और थोपने के बाद उसको कानून मानने के साथ हमको उसमें चलाते रहते हो। और दूसरा जी जी बात ये है, रिसेंटली ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली एक ग्राम सभा हुआ था, तो जिसमें हमारे सब कलेक्टर ने कहा जो हम लोग प्रजा है, मतलब आदिवासी लोग प्रजा है, वो सिटीजन्स नहीं। सुभजीत, आप क्या ये आपका सवाल काफी संक्षेप था और सही था। क्या इसका उत्तर दे सकते हैं दयामनी जी? और आपने सवाल भी लिख दिया है तो इसलिए मैं सोच रही ठीक है, थी। जी मैं इतना ही जी बोलना जी था। ठीक। बिल्कुल ठीक है। दयामनी जी, आप बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारे युवा साथी अभी सवाल किए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हम लोग आर्सेलर के साथ हम लोग संघर्ष किए, तो पूरा देश विदेश के लोग मुझसे कहते थे कि आप स्टील जायंट से कैसे लड़ेंगे। मैं सिर्फ 5th शेड्यूल और हमारा सीएनटी एक्ट को अपना आधार मान के मैंने कहा कि हम जमीन के मालिक हैं, सीएनटी एक्ट हमारा अधिकार है, 5th शेड्यूल में हम यहाँ पर जमीन के मालिक हैं, और हम किसी आपका स्टील जैंट को नहीं जानते हैं। यहाँ का बकरी चराने वाला यहाँ का मालिक है, यहाँ का गाय चराने वाला का मालिक है। हम लोग मैंने संघर्ष किए, लंबी संघर्ष किए, हम लोग स्टील जैंट को अपने जमीन में 1 इंच भी कदम नहीं रखने दिए। ये हम संवैधानिक अधिकार के तहत ही हमने किया। और आज जो हम पर थोपी जा रही है, इसीलिए मैंने अपना पहला मैंने अपना स्पीच में ही हमने ये कहा
कि हम लोग ड्रोन सर्वे के खिलाफ ही हम लोग लड़ाई लड़े, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के खिलाफ ही हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आप हम पर थोपने जा रहे हैं वो तमाम कानून सिर्फ हमको लूटने के लिए है। लेकिन जब हम इसके लिए उठ के खड़ा नहीं होंगे जो हम पर थोपी जा रही उस व्यवस्था के खिलाफ में, तो हम लड़ाई हार जाएंगे। जी जी दयामणि जी, I'll move to Bijoy. Yeah. So Bijoy has got a few questions. Bijoy, there are three. I think there are three questions for you. Bijoy, so first question is kindly share about the green and orange areas in forest cover that had been demarcated. So I think the question is about the orange areas that in certain parts of Madhya Pradesh, and I don't know if there are any green areas. Please, Bijoy, if you can answer that question. And second question is about carbon credit. Question to Mr. Bijoy, how the carbon credit market may work in case for forest rights. Is there any chance that it would be implemented in a manner that is in tandem with community rights of resources? Yeah. And then there is the third question, which is about Mizoram and the FCAA Amendment 2023 bill. It says a new railway line was recently inaugurated in highly forested hills of Mizoram by Modi. The FCAA to 2023 bill was also passed by Chief Minister of Mizoram. How do we negotiate ideas of development and conservation? इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं दयामणि जी के लिए अभी? Should I translate? Okay. ठीक है। अच्छा, ठीक है. So Bijoy, are you prepared to answer these questions? Yeah, very briefly, the issue of green forest, I have no idea what is this green forest. These orange areas are there in Madhya Pradesh. It is a contested land area between the revenue department, the forest department. Notification has not been done. It's not been surveyed. There's a conflicts with the people, etc., etc. Yeah, so that is what orange area is. In terms of law, as of now, the Forest Rights Act is applicable to the orange areas because it is generally considered to be a forest area. In terms of carbon credit, the first question that you need to think is that, in which way is carbon credit, to whom, and who benefits from carbon credit? The primary beneficiaries are the people who buy the carbon credit, and they would buy the carbon credit simply because they want to compensate the greenhouse gas that they are wanting to emit, or it is to satisfy certain provisions which require certain kind of carbon credit to be shown in their account in terms of neutralizing some of their carbon production. So carbon credit to increase GHG emission or to compensate for past or existing GHG emission. This is one part. The second thing is that this carbon credit is from trees, tree plantation, and tree plantation in forested areas, in mountains areas, has a lot of ecological problem, because this is not, it is actually tree plantation. In other words, it is timber, and it has implications in terms of soil erosion, in soil fertility, and also in reduction of groundwater. So it has an ecological consequence if carbon sequestration projects are implemented in the forested area or in the forest region. Now, whether community can get benefit, yes, some communities. In fact, that is the major drive that I want to invest on carbon sequestration, but I don't want to buy the land. So the land is available with you. We enter into an MOU or a lease agreement or whatever, and I put the money to plant the trees,
and I would be managing it, or I would be, using you as a labor for that, and you would get certain benefit. And once the carbon is harvested, you may get a certain share. Sure, that benefit would be there to that particular individual. In terms of Mizoram, yes, Mizoram has accepted the amendment. Earlier, they had rejected it. Now they have accepted it. What are the implications? What could be the outcome? If they accept it, it simply means that most of Mizoram, the Forest Conservation Act procedure is not applicable. So then what is applicable? Most parts of Mizoram, the forest regions, are community forests, and therefore community norms are anyway the method. So it's basically, to some extent, one part of the thing is that, that this acceptance of this amendment ensures that that part of the forest in Mizoram is kept out of the procedures of the Forest Conservation Act. Because since in Supreme Court had extended the forest laws to all forested areas, including community forest. So legally speaking, even community forests are falling within the definition of forest, and therefore the Forest Department and the forest legislations. Now the FCA was also applicable legally, though not necessarily implemented. Now with the acceptance of FCA amendment, what would happen is that that particular part of the forest will be off the procedures of FCA. In that sense, it could revert back to community. So this is one possibility. Does that preclude the possibility of the protecting of the forest? Definitely not, because even community forests are being negotiated. And despite community forest being with in countries, in states like Mizoram, it is largely the village chief who would be deciding, and forests are now being opened up because the village chief or the village council. So there are a lot of conflicts which are there happening within the community forest regime in the Northeast. Legally, in 1996, Supreme Court amendment, position on forest makes the forest laws applicable to Mizoram's community forest areas, number one. Okay. The forest conservation, so which means that FCA is also applicable to the community forest areas in Mizoram. Now with the amendment being what you call, approved by the Mizoram legislature, it would mean that large parts of forest, that 100 kilometers from the international border, etc., large part of the forest would fall outside the purview of FCA procedures. So which means that it will revert back to the community control. Now, whether the community control is going to be largely beneficial for the community or to some people, or what is happening there, there are a lot of conflicts are there, where village chiefs are writing off community forests without consulting the Gram Sabha, etc., etc. So a lot of internal churning is going on in terms of the extent to which the community forest regime is being challenged or fragmented or broken by modern capitalist forces. Just one clarification was given by one of the participants that the chieftainship is abolished. It is through elected process that's been done. So Sunil Jojo had his hand up. Remember Pooja? I don't know. Is he here? Sunil, Yeah. are you here? Like, do you want to ask your question? Thank you very much. I am here. I am from Sundargarh in Odisha. Okay. And I just wanted to contribute something to the discussions, and there are a lot of questions, but I'm not going to ask because of the time shortage. And question about Adivasi struggle today is huge. There are so many issues that we can't really discuss and understand them all during this short period of time. But what I wanted to contribute to the fact that the relentless
a violation of constitution that is being done by the administration, everyone in the government. I mean, it is simply amazing. They're hell-bent on destroying Adivasis. I'm saying this because we are facing the realities on ground, and on daily basis, there are a lot of confrontations taking place between police, administrations, and corporate gundas who are attacking people for grabbing the lands. And this is growing day by day. There are so many efforts being initiated in Odisha now, and I mean, in coming days, the land grabbing is going to increase in manifold, and in Sundargarh being the golden hen for laying egg, it is the target of the government now, and even for all the other people, non-tribals, to grab land here, to settle here, because of the prospects in future that they have with regard to trade, commerce, employment, jobs, etc. The key worrying thing today is happening is that despite having fifth schedule where everything is protected for Adivasis, and government, on the other hand, relentlessly violating every provisions, doing all sorts of human rights violations, Adivasis are forced to migrate to other areas for livelihood, mainly for livelihood. And this location, I mean, the Adivasis areas are becoming less in number. Our fear is that tomorrow in 27, when there is going to be the census, our number will be below 50% and it will be delisted, and the entire Adivasi Ilaka areas will be open for everyone to grab. This is the big issue today we are facing. Starting from very beginning till today, this one particular understanding is not really given importance. If it is a scheduled area, irrespective of people coming and settling in the area, it still remains the fifth scheduled area. The criteria of having the percentage of people is detrimental to Adivasi existence today, given entire development process is corporate-led, capitalist-led, and all the greedy people, all the greedy development system, which is completely breaking everything that is meant for Adivasis. So this is one thing. Yeah, thank you so much, Sunilji. I think you've actually really said what our series is about. We have titled it Deadline or Death Sentence in relation. If you allow me, just Yes. I wanted to continue one line. Yes, please. Adivasis are the aborigines. They are the real owners of India. They are the first people, the first nation. Even the Supreme Court has accepted that 8% Adivasis are the real owners of India and 92 are all immigrants. In 7th October 1938, there were 33 tribes were notified as aborigines by the Bihar government, then Bihar government. So Adivasis are the real owners of India. And thank you, Sunil. Thank you for that intervention. Thank you so much, everyone, and especially our speakers, Dayamani ji, Bijoy ji, and everyone, or the translators. And everyone who has stayed with us till now. It has been a long session, but we can see from the comments it was important. Finally, we are not doing this series merely to impart information. The Adivasi region of Bastar, on which Pooja provided the recent update at the start, is a and as we have discussed in this webinar also today, Jharkhand and Odisha and up to Mizoram, these are all microcosms of the worldwide struggle of indigenous peoples against what's happening in the name of development. The rapacious march of the extractive industries and the resultant destruction of lives, livelihoods, and the environment.
We hope that this series amplifies Adivasi voices in Bastar, in Jharkhand, in Odisha, and everywhere else who are exposing the Indian state's violence threatening their existence. We therefore also hope our series helps in bringing together more people and organizations in solidarity with the struggles of the Adivasi peoples. We encourage you to keep connected with us, amplify our work, and try to organize together in building a global solidarity. Thank you and good evening. Thank you. Thank you. सबको जोहार सबको Thank you. तो Thank you. जोहार Thank you. Johar, thank you, Sabunko.